All right. So in the last class, what we talked about was then we started off with biological molecules, and we started to talk about the nutrients and what biological molecules are. जब हम लोग biological molecules के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई हमारे पास biological molecules क्या होते हैं. Biological molecules are those substances that are needed for the buildup of an organism. They may provide us with energy, and at the same time they are needed for physical and mental well-being, right? फिर हम लोगों ने एक बात करी थी कि भाई हमारे पास कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं that we will be discussing in this particular topic. So we had carbohydrates, we had lipids, we had proteins, polynucleotides, vitamins, mineral ions, and fiber. फिर हमने शुरू की एक बात करी थी कि हम what are the first four of the biological molecules that we have, which are carbohydrates, lipids, proteins, and the polynucleotides. They are all polymers, which means that they are large substances. और फिर हम लोगों ने क्या कहा था कि भाई all of them are organic molecules, that is they're hydrocarbons, and they are made up of carbon, hydrogen, and oxygen, carbon and hydrogen mainly. उसके अलावा इन सब के अंदर कौन से elements हमेशा होंगे? Oxygen, right? So besides the carbon and hydrogen, they're always going to have oxygen. Proteins के अंदर nitrogen extra होता है जो हमेशा होगा, और polynucleotides के अंदर nitrogen और phosphorus दोनों हमेशा होंगे, right? Then we talked about what carbohydrates are. हमने कहा था कि भाई carbohydrates हमारे पास sugars होती हैं, sugars aka saccharides, also known as saccharides. अगर हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के मोनोमर्स होंगे, सो वील बी हैविंग मोनोसैकेराइड्स. अगर दो मोनोमर्स को ज्वाइन अप कर दोगे तो हमारे पास डाइसैकेराइड आ जाएगा. And when you're going to join up many monomers together or dimers together, you're going to get, or monosaccharides or disaccharides together, you're going to get polysaccharides. ठीक है? अच्छा जी. दूसरी चीज पर हम लोगों ने क्या बात करी थी कि भाई हमारे पास monosaccharides, they need to have at the very least 3 carbons, and at the maximum they can have about 7 carbons, right? How are we supposed to put the carbon, hydrogen, and oxygen in the formulas? It's going to be CnH2ON, where N is the number of carbons. वालेकुम अस्सलाम बेटे. अच्छा, तो अगर हमारे पास कोई 3 कार्बन वाला मोनोसेक्राइड होगा वो ट्रायो शुगर हो जाएगी. 2 कार्बन 4 कार्बन वाला होगा वो टेट्रो शुगर. 5 कार्बन वाला पेंटोस, और 6 कार्बन वाला हेक्सोस. And again, you're just going to flip the number of carbons right here, and the whole formula are going to change. ठीक है? Out of all of them, we discussed hexo sugars. हमने बात करी थी कि भाई हमारे पास हेक्सो शुगर्स के 3 मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज. Now, whenever, and all three of them, they have different structure but the same formula. Since all three of them are hexo sugars, the formula is C6H12O6, right? Now, if we're going to join up two molecules of glucose together, we're going to get maltose along with water. If we're going to join up fructose and glucose, what do we get? So glucose plus glucose gives us maltose. Glucose plus fructose is going to get us what? Sucrose. Spelling ठीक करो. ठीक है? And galactose plus glucose is going to give you lactose. Very good. ठीक है? अच्छा जी. Along with all the disaccharides that we get, we also get a molecule of water. Hence, this process is called as what? Condensation. Hence, this process is called as condensation. ठीक है? इसी वजह से the formula for the disaccharide is not going to be C6H24O12. Instead, it's going to be C12H22. 24 से 22 क्यों हुआ? 24 से 22 क्यों हुआ? क्योंकि हम लोगों ने दो out of the 24 hydrogens that we had, हमने दो hydrogens water के लिए निकाल दी. Very good. इसी तरीके से C12H22O12 क्यों नहीं हुआ? O11 क्यों है? क्योंकि वाटर के लिए हमने एक ऑक्सीजन निकाल दिया. ठीक है, मेक सेंस? हाँ नहीं, हम यही बात कर रहे हैं. वी जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट वी डिड इन द यस्टरडेज क्लास. ठीक है. अच्छा, अब इसको देखो. तो हमने कहा कि whenever we're going to join up monosaccharides together, what are we going to get? We're going to get disaccharides plus a molecule of water.
अब what we need to know are the sources of this disaccharide. ठीक है. Let's talk about maltose first. Have we ever heard about the word malt? Malt क्या होता है? नहीं नहीं, malt is not milk. Malt again is not fruit. वो माल्टा होता है, as Laiba said. I'm talking about the, और वो भी उर्दू का लफ्ज है, मैं तो अंग्रेजी के अंदर पूछ रहा हूँ माल्ट क्या होता है. You know chocolate malt cake? हाँ हाँ. Have you guys ever had malt beverages? Lemon malt, very good, very good. ठीक है. Pineapple malt, Bavaria, Barbican, right? Uh, you know, whatever जब भी हम लोग malt beverages पीते हैं उनके ऊपर क्या बना हुआ होता है? Is there something? Is there some sort of a plant made? चलो, let's make it more relatable. कुछ दिनों पहले, like a few years ago, Milo wale, they came up with this thing called as proto malt, right? And in their advertisements, they used to show wheat. They used to show wheat, right? Malt beverages हमारे पास जो होती हैं, they are made from barley. ठीक है. Wheat और barley दोनों हमारे पास क्या है? They are grains. तो हमारे पास जो ग्रेन शुगर होता है, जो ग्रेन से आता है, you know the one that we're getting from roti. What is a roti? What is a bread made up of? It's made up of atta. Atta is wheat. How do we get atta? We crush the seeds, isn't it? Very good, very good, very good, Musab. तो ये जो माल्टोस है, जो हमारे पास मॉल्ट शुगर है, ये हमारे पास कहाँ से आती है? इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ग्रेन्स, आटा, दाल, योर जॉ. ठीक है. इसी तरीके से सुक्रोज हमारे पास जो है, सुक्रोज इज बेसिकली फ्रूट शुगर. इट्स अ कार्बोहाइड्रेट दैट वी गेट फ्रॉम वेयर, दैट वी गेट फ्रॉम फ्रूट्स. ठीक है. लैक्टोज किधर से आएगा? वेरी गुड मिफ्साम. एनीवन एल्स? वेयर वुड यू गेट लैक्टोज फ्रॉम? मिल्क. ठीक है. So it's a very common word, lactogen. हमारे पास बहुत सारे वो बच्चों के मिल्क होते हैं which are named after lacto, right? Dairy, very good. Lactose free milk, very good. उसमें lactose नहीं होता. यहाँ तक बात समझ में आ रही है? Now let's say one day I decide to make myself a granola bowl, right? अब मैंने granola bowl के अंदर क्या करा? I took some fruits, उसमें से मुझे सुक्रोज मिली. I had some yogurt, उसमें से मुझे lactose मिला. And I also put in some grains, right? मैंने seeds डाल दी उसके अंदर. Now what I am consuming are all three of these disaccharides. There's a small problem, और वो problem ये है कि these disaccharides they cannot be absorbed. So in my digestive system, these disaccharides would have to be broken down again into the monosaccharides so that they can be absorbed. Right? Enzyme से पहले breakdown होगा. मैं समझाना क्या चाह रहा हूं मेरे बच्चों, जब भी हमें डाइसैकेराइड्स या पॉलीसैकेराइड्स बनाने होते हैं, we undergo a process that we call as condensation, right? Condensation में डाइसैकेराइड अगर और जोड़ दोगे तो पॉलीसैकेराइड बन जाएगा. एंड व्हाट डू वी गेट एज वेल? यस हनी, आई हैव. We also get water molecules. अगर मुझे डाइसैकेराइड को वापस मोनोसैकेराइड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तो मुझे किस चीज की एडिशन करनी पड़ेगी? वाटर की, right? I would have to add water again. So the reverse process that we have when you want to break down the disaccharides back into monosaccharides, it's a catabolic reaction. It's called as hydrolysis. Laiba, naturally ये बन जाती हैं. I'm not making a disaccharide. Disaccharide is a reversible reaction. Disaccharide nature के अंदर exist कर रहा है.
For example, if the plants, एक तरीके से अगर हम लोग सोचें तो भाई plants are making it. अगर for example, if an animal is producing milk, right? तो वो प्रोड्यूस कर रहा है ताकि उसको, बिकॉज इट्स नीडेड टू फॉर्म टू प्रोड्यूस मिल्क, अगर लैक्टोज नहीं होगा तो मिल्क नहीं बनेगा, राइट? सो अब मैं क्या करूँ, अब मैं मिल्क कंज्यूम कर रहा हूँ ना, लेकिन मिल्क में से मैं शुगर एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, आई कैन नॉट एब्जॉर्ब गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज, तो मुझे इस लैक्टोज को ब्रेक डाउन करना पड़ेगा ड्यूरिंग डाइजेशन. सो अगर हम लोग देखें, फॉर्मेशन ऑफ डाइसैकेराइड्स या फिर कंडेंसेशन is what is an anabolic process. Breakdown of disaccharides or polysaccharides or polymers back into monosaccharides or monomers is hydrolysis, which is a catabolic process. वो बच्चे जो भूल गए हैं एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक प्रोसेस हमारे पास क्या होते हैं, एक बार रिवाइज कर लीजिए. हमने ये एंजाइम के अंदर पढ़ा था. Those reactions which are concerned with breakdown are catabolic reactions. Those reactions which are concerned with build up are anabolic reactions. खैर, coming back here, ठीक है. वेरी गुड, वेरी गुड सम. अच्छा अब देखो, द वर्ड लाइसिस. अच्छा, लाइसिस एक अलग वर्ड है, ठीक है. लाइसिस का मतलब क्या होता है? लाइसिस इटसेल्फ मींस व्हाट? ब्रेक डाउन. व्हाट डज द वर्ड हाइड्रो मींस? हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? हाइड्रो का मतलब क्या हुआ? वाटर, 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 ठीक है. हाइड्रो समथिंग दैट रिफर्स टू वाटर. तो हमें इस रिएक्शन के अंदर वाटर को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. So breakdown using water, very good, is called as hydrolysis. ठीक है. तो again, if I would want to break down maltose and back into two molecules of glucose, I would have to add water. If I want to break down sucrose into glucose and fructose, I would have to add water and make it undergo hydrolysis. I'm going to hydrolyze lactose using water into glucose and galactose. ये वाली बात समझ में आई? Do we understand this, guys? यहाँ तक कोई मसला? Does anyone have any problem so far? All right, all right, all right, all right. Okay, अब आगे चलते हैं. अच्छा, अब before we go further, एक छोटी सी चीज, before we move towards let's say the polysaccharides, एक छोटी सी चीज हम लोग पढ़ते हैं. और हम लोग क्या देख रहे हैं? Let's talk about a few properties of mono and disaccharides. अच्छा जी, सबसे पहली चीज, both or rather all the monosaccharides and polysaccharides, uh, Mani, it's okay. We just talked about this. तो आगे इससे वो करो, चीजें समझ में आ जाएंगी मेरा बेटा. Breakdown principle of water hydrolysis, yes. ठीक है. Don't worry, honey. Just continue with this. We'll get this. Don't worry. Okay, come back here. All mono and all polysaccharides are what? They are sweet in taste. ठीक है. दूसरी बात हमारे पास क्या होती है? All of them are soluble. और तीसरी चीज क्या होती है? All of them are what? Are reactive in one way or the other. ठीक है. मतलब they can undergo chemical reactions and very easily. बाद reactive का मतलब क्या हुआ कि ये देखो, एक they can undergo chemical reactions. ऐसा नहीं कि बिल्कुल भी chemical reaction नहीं जाएंगी, लेकिन they it's very easy to, let's say, make them undergo chemical reactions. Soluble in what? Soluble in water. ये जो सुक्रोज है ना हमारे पास, ये हमारे घर की चीनी है. This is the chini that we use in our house, the sugar that we have in our house, right? वो sucrose है. So it's soluble in water. Make sense? All right. अच्छा, अब now that we know this, up so far again, very quickly, how many carbohydrates do we know by name? 6. We know 3 monosaccharides, glucose, fructose, and galactose, right? We know the 3 disaccharides, glucose plus glucose gives us maltose, glucose plus fructose gives us sucrose, and glucose plus galactose gives us lactose.
Now we're going to talk about three polysaccharides. Okay, very good, bacha. Now when we talk about the polysaccharides, हमारे पास आउट ऑफ द थ्री पॉलीसैकेराइड्स, हमारे पास टोटल पॉलीसैकेराइड्स कितनी है? तीन है, ठीक है। आउट ऑफ द थ्री पॉलीसैकेराइड्स दैट वी हैव, two of them act as energy stored, act as energy what? Store, ठीक है। तो हम कहते हैं कि out of the three polysaccharides that we have, two of them act as short term energy store. Now let me give an example. What do I mean by very good, Sam? What do I mean by the word short term energy store? Today I had breakfast at about 6:30 a.m., right? So it's about 11 hours so far, ठीक है। उसके बाद I haven't had anything, मैंने कुछ खाया नहीं है। हाँ, मतलब there's no glucose that is, or there is no carbohydrate that has entered my system. I had water, I had chai, ठीक है, उसमें चीनी नहीं थी। खैर, बात ये है, what I'm trying to tell you is, after that I had taught three classes. Yours is the fourth one, and the previous three classes were physical classes. So I had to move. I was not sitting, I was standing and teaching those kids. तो कहने का मकसद क्या है, मैंने तो 11 घंटे पहले खाना खाया था ना, और आई हैड सम कार्बोहाइड्रेट सोर्स या ग्लूकोज मेरे बॉडी के अंदर 11 घंटे पहले गया था। लेकिन उसके बाद से तो आई एम कंटिन्यूसली वर्किंग एंड आई एम नॉट कंज्यूमिंग एनीथिंग ड्यूरिंग दिस टाइम। वुड माय बॉडी नॉट नीड एनी सॉर्ट ऑफ एनर्जी और एनी सॉर्ट ऑफ ग्लूकोज? वेयर इज दिस ग्लूकोज कमिंग फ्रॉम? ठीक है, अच्छा जी। What happens is, whenever we eat, whenever as Pakistanis हम जब खा रहे होते हैं, so what happens is we eat a lot, we eat more than it's required, एक तरीके से, ठीक है। तो अब वो जो मैंने एक्स्ट्रा ग्लूकोज सुबह के टाइम कंज्यूम करा था ना, वो मेरी बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। सिमिलरली प्लांट्स दिन के लेट्स से 12 घंटे फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, अगले 12 घंटे उनके पास कोई ग्लूकोज नहीं आ रहा, अगले 12 घंटे उनके पास कोई ग्लूकोज नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उन्होंने दिन के टाइम एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर कर लिया था। डू वी गेट इट? अब व्हाट हैपेंस, इसको देखो। अब ऑल द व्हाइल आई वाज वर्किंग, जो भी मैंने एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर करा ना इन फॉर्म ऑफ अ पॉलीसैकेराइड, वो ब्रेक डाउन होते गया, वो हाइड्रोलाइज होते गया इनटू बैक इनटू ग्लूकोज, so that my nutrition requirements can be met. Make sense? कि अब जो मैं नहीं खा रहा हूँ लेकिन मुझे ग्लूकोज की जरूरत है, तो मैंने सुबह एक्स्ट्रा ग्लूकोज स्टोर कर लिया था, अब वो थोड़ा 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 करके क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। मेक सेंस? वंशा से पहले तुम अपनी स्पेलिंग ठीक करो, तुम्हारा 1 मार्क तो यही चले जाएगा। खैर, नाउ नाउ अब what happens is okay, so Tanisha, would sucrose when broken down not give me glucose? All right, so that's why we call them short term. वो तकरीबन एट द मैक्सिमम यू कैन स्टोर देम फॉर 16 आवर्स। अगर 16 घंटे के बाद भी इफ यू आर नॉट गोइंग टू ईट एनीथिंग, you will run out of these polysaccharides. All right. Now we have two polysaccharides that we have. Excuse me. The first one is starch. The second one is glycogen. ठीक है जी। Now, up why we're writing them as separate? Because starch is present only where? In plants, ठीक है। प्लांट्स के अंदर भी प्लांट्स के अंदर भी स्टार्च 3 जगह स्टोर होता है। वेरी गुड। किधर किधर स्टोर होता है?
प्लांट्स के अंदर स्टार्च? Inside a plant you can find starch in seeds, right? हम दालें खा रहे हैं, दाल contains starch, our bread contains starch, isn't it? Besides the seeds, they store it in their roots and stem. उसके अंदर एक organ होता है, cortex कहते हैं उसे, वहां स्टोर होता है। ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं बेटे, they are the polysaccharides ना मिनायल। So would they not be carbohydrates or saccharides? And udhar where photosynthesis is occurring, which is the leaf itself, और लीफ के अंदर भी किधर होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ठीक है, ओके। ग्लाइकोजन हमारे पास जो होता है ये किधर होता है? इट्स प्रेजेंट इन एनिमल्स, और एनिमल्स के अलावा फंजाई। ठीक है, मैं बता रहा हूँ बेटे, बता रहा हूँ, विल कम टू दैट। अच्छा, फंगस, animals and fungi, we can break down starch if we're consuming plants. We cannot store our carbohydrates as starch. We store our carbohydrates as glycogen. अच्छा, एनिमल्स के अंदर कौन सी दो लोकेशन के ऊपर ग्लाइकोजन स्टोर होता है? नंबर वन इन द लिवर, नंबर टू इन द मसल्स। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ऑल राइट। अच्छा, अब जो हमारे पास तीसरा पॉलीसेकेराइड है, जो तीसरा पॉलीसेकेराइड है, दैट हैज अ स्ट्रक्चरल रोल। उससे एनर्जी का कोई लेना देना है ही नहीं, वो एनर्जी के दूर दूर भी नहीं जाता। ठीक है, और वो हमारे पास कौन सा? वेरी गुड, इट इज सेल्यूलोस। ठीक है, और मेरे सामने मुझे बताया कि सर सेल्यूलोस कहाँ होता है, व्हाट डज इट मेक, क्या बनाता है बच्चों? हाँ भाई, व्हाट डज सेल्यूलोस मेक? मेक्स, इट मेक्स प्लांट सेल वॉल। गाइस क्या हो गया? चैप्टर वन, वेरी गुड, सेल वॉल, सेल वॉल, सेल वॉल। ठीक है, अच्छा जी। अब नाउ दैट वी नो दिस, नाउ दैट वी नो दिस, ओके, नाउ दैट वी नो दिस, अब बात यह है, अब इस चीज को देखिएगा कि एक बात याद रखिए, पॉलीसैकेराइड्स कैसे बन रहे हैं? पॉलीसैकेराइड्स आर मेड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, राइट? And when polysaccharides are going to be broken down once again into monosaccharides, they're going to be done through hydrolysis. Both condensation and hydrolysis uses energy. थोड़ी एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन it uses up energy. अब बात यह है कि सर, मुझसे भी लाइबा ने पूछा था कि सर आप ये प्रोसेस करवा क्यों रहे हैं? आप डाइसैकेराइड को डाइसैकेराइड स्टोर करें, पॉली वो मोनोसैकेराइड को मोनोसैकेराइड स्टोर करें। What is the whole point of the plants converting their monosaccharides or disaccharides into starch, and the animals converting their mono and disaccharides into glycogen? ग्लूकोज तो ग्लूकोज रहने देना। अब मुझे एक बात ही, हमारे पास इससे एक सवाल ये आता है, सवाल ये आता है कि भाई, why can glucose not be stored as a monosaccharides? Right. Before we tell you about this, before we tell you about this, नहीं, वो तो वैसे भी यूज अप हो रहा है, doesn't have to be, because it's getting used up, that's the whole point. पॉलीसेकेंडरी ब्रेकडाउन होकर उसको यूज अप ही करवा रहे हैं मेरे बच्चा। खैर, खैर, मुझे एक बात ही बताओ, देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड एज डायबिटीज। व्हाट हैपेंस इन डायबिटीज? ब्लड के अंदर किस चीज की कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है डायबिटीज के अंदर? शुगर। कौन सी वाली शुगर? ग्लूकोज, वेरी गुड। ऑल ऑफ दीज आर शुगर्स बाय द वे, ठीक है, ग्लूकोज की। सो ब्लड के अंदर अगर ग्लूकोज मेरा इंक्रीज हो गया, shouldn't that be a good thing? Why do we consider that as a disease?
राइट। अब देखो होता क्या है, इसको देखिए। इसके तीन रीजन है। नंबर वन, ग्लूकोज, और इवन इफ यू टॉक अबाउट मोनोसैकेराइड्स और डाइसैकेराइड्स, ऑल ऑफ देम आर व्हाट मेरे बच्चों? रिएक्टिव। ऑल ऑफ देम आर रिएक्टिव। वो तो होता है बच्चा, वो तो होता है, ठीक है। लेकिन उसके अलावा वो इसलिए होता है बिकॉज अगेन इट्स अ वेरी हाई कंसंट्रेशन, तो वो रीअब्सॉर्ब नहीं हो पाता। खैर, द मेजर प्रॉब्लम इज that why I cannot let glucose stay as glucose because it's reactive, right? So just I like my pupus, just by the way. I like my pupus. They're not alive anymore, but I like them. Yeah, they were nice. वरना generally हमारे पास क्या होता है, controversially, it's a controversial thing कि whenever the pupus are going to come to our house on Eid, they're going to give us, we can only tolerate them as long as they give our lifafas. So as soon as we have our Eid ke lifafas in our hand, we are like, okay, ja kyun nahi rahi hai ye, right? If she stays here, uh, let's say for a few more hours or a few more, let's say for thoda bahut time. So what's going to happen is something's going to happen, and this is something that we see. uh, I like my propose. I cannot say the very same if I would have ever have kids. I can't say the very same for them if they like the propose. So in a family event, what happens is everything would be going fine, and then some sort of an argument or something, or a fight would break. And the glucose is exactly like this. जब भी एक सेल के अंदर ग्लूकोज आता है ना, as soon as the molecule of glucose enters into the cell, सेल कहता है या तो उसको स्टोर करो, राइट, इफ इट्स लिवर सेल, या फिर इसको जल्दी से रिस्पायर करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में कन्वर्ट करो. It should not stay in our cells. Why? Because it's reactive. The very same as I propose, it's reactive, right? If it's going to be in our cells for a very long time, it can alter the normal chemical reactions. ठीक है, तो हम कहते हैं आसान अल्फाजों के अंदर भाई, क्योंकि since it's reactive, it's going to disturb the chemical reactions that are going on inside the cell. It disturbs the cell chemistry, right? Yeah. Okay. Number two, glucose is very soluble, right? Glucose is very soluble. अब मुझे एक बात ही बताओ, अगर एक सेल के अंदर जहां ग्लूकोज को स्टोर होना है उसके अंदर ग्लूकोज की कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, इज ग्लूकोज soluble in water? Yes, it is. So it's a solute. Whenever the solute concentration is going to increase, what's going to happen to the water potential? Solid concentration increase हुई, water potential क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. The water potential of the cell is going to decrease, causing water molecules from the surrounding solutions to enter into the animal cells, causing them to swell up and ultimately what? Burst. That's why we don't like a lot of glucose in our bloodstreams, right? That's why diabetes, besides glucose getting out in urine, it may cause this complication as well. Okay, since it's soluble, ये क्या चीज डिस्टर्ब कर देगा? वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल. ठीक है, ऑस्मोटिक बैलेंस कह लो, ठीक है. और तीसरी चीज क्या है? इट इज गोइंग टू टेक अ लॉट ऑफ स्पेस. आप इसको इस तरीके से देखो मेरे बच्चे लोग. लेट्स से I have a classroom right here. This is one place where I go right after I'm done with my colleges. So, and sometimes I usually take a nap there as well. So it's a classroom. So उस classroom के अंदर ना ये सारी जगह पे chairs रखी हुई हैं. If I would want कि अच्छा मैं इस classroom के अंदर एक couch लेकर आ जाऊं, is there any place where I can fit the couch? नहीं. Why? Because all the chairs, they're scattered. But let's say one day what I decide is, मैंने इन सारी चेयर्स को लिया और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक सबको स्टैक करना शुरू कर दिया. सो आई स्टार्टेड टू स्टैक ऑल ऑफ दीज चेयर्स ऑन टॉप ऑफ ईच अदर. एक पाइल बना दिया और उसको कमरे के कोने में घुसा दिया. अब मेरे पास इतना सारा स्पेस क्लियर आउट हो गया. अगर ग्लूकोज एज मोनोसेक्राइड रहता ना, इट वुड हैव स्कैटर्ड ऑल थ्रू आउट इन द सेल. इट वुड हैव टेकन अप अ लॉट ऑफ स्पेस.
सो हम क्या करते हैं, उसको जोड़ते हैं और एक जगह पे जाके उसको रख देते हैं। ठीक है। अब नाउ दैट वी नो कि भाई व्हाई कैन यू नॉट स्टोर ग्लूकोज द मोनोसैकेराइड, अगर हम लोग एक और सवाल बनाए कि सो व्हाट्स द बिग डील विद द पॉलीसैकेराइड्स, if I'm not able to store glucose as monosaccharide, so how am I able to store it as a polysaccharide? तो हमारे पास एक और सवाल बनता है कि why are polysaccharides a good short term energy store? ठीक है, वेरी गुड। अब इसको उल्टा कर दो। नंबर वन, दे आर अनरिएक्टिव, दे आर इनर्ट। इनर्ट का मतलब अनरिएक्टिव होता है, ठीक है, केमिस्ट्री में याद रखना। So since they're inert, they're not reactive. Will they alter any chemical reactions? No. Number two, they are insoluble. हाँ, जैसे noble gases, बिल्कुल। They are insoluble. Since they're insoluble, will they affect the water potential of the cell? नहीं, solute ही नहीं है ना, ठीक है। और तीसरी चीज क्या है? They are compact, like those stack of chairs. So once you convert a lot of glucose molecules into a small structure, you can keep it anywhere in the cell. ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है मेरे बच्चों? ऑल राइट, यहाँ तक कोई मसला नहीं? ओके, अब बस एक आखिरी चीज करते हैं, देन विल गेट डन विद द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स जनरली इनकी प्रॉपर्टीज देखें, तो सबसे पहली बात क्या आती है, हम लोग पढ़ते हैं कि भाई दे आर द चीपेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। चीपेस्ट का मतलब ये नहीं कि ये सस्ते मिलते हैं, ऐसा हरगिज मतलब ये नहीं है। लेट्स गो बैक to the time where people had to grow or hunt their own food, right? Let's go before all the industrialization that occurred. नहीं, कोई छुट्टी नहीं। Uh, so let's imagine a caveman hunting, let's say, a deer. So agar the deer organisms, animals, they're a very good source of protein and lipids. अब मुझे बताओ, would it take me more energy to run after the deer and then hunt it down and then then consume it, or would it take more energy to pluck an apple off a tree and consume it? It's easier consuming energy in form of carbohydrates. मैंने एक एप्पल प्लक आउट कर लिया, अगर मैं पत्ता भी खाऊंगा तो मुझे स्टार्च मिल जाएगा। डू वी गेट इट? बात समझ में आ रही है? दिस इज द ट्रूथ, ये वाली चीज है, ठीक है। तो चीपेस्ट सोर्स का मतलब क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अक्वायर करने के लिए मुझे इतनी एनर्जी को स्पेंड नहीं करना पड़ता। आई हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ एनर्जी, राइट? ओके, दूसरी बात क्या है, सिंस दे रिएक्टिव ना, दैट्स अ गुड थिंग। लेट्स टॉक अबाउट अ गुड थिंग ऑफ अबाउट देम बीइंग रिएक्टिव। तो हमने कहा सिंस दे आर रिएक्टिव, स्पेशली द ग्लूकोज, they are or they can be easily respired. They can undergo respiration to produce what? Very good. To produce energy, ठीक है, पहली बात। तीसरी बात क्या है कि भाई they can make structures such as plant cell walls. All right, so ये important चीज थी जो हम लोग वो करेंगे। So with this we are done with the carbohydrates.